गाइस, मैं हूं अन्वेषा मुखर्जी और आप देख रहे हो सिंपल टिप्स अन्वेषा। सो फेस्टिवल टाइम गाइस, करवा चौथ, दिवाली, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस माय फेस्टिवल होल स्किन केयर, मेकअप एंड आउटफिट लुक। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये करेंगे, जो मैं आउटफिट पहनूंगी एंड जो ज्वेलरी मैं पहनूंगी वो मैं उत्सव को बोलूंगी मेरे लिए चूज कर दे। जल्दी से पहले मेकअप स्टार्ट करते हैं एंड गोइंग टू बी वेरी इजी, सिंपल, फेस्टिव एंड बिगिनर फ्रेंडली गाइस। सो लेट अस बिगिन विद So I'm starting with the Dermaco AHA BHA foaming cleanser to cleanse my face. Then I'm using the 10% niacinamide serum. I've worn the sari and I started with a clean base. So I'm using Smashbox primer now first. Foundation के लिए using this a combination of two shades. ये Givenchy का Tan Couture Balm है और ये Smashbox का स्टूडियो स्किन 15 आवर वेयर हाइड्रेशन फाउंडेशन है। इन दोनों का शेड मिला के मेरे लिए, मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट शेड बनता है। और इसमें थोड़ा सा लुमिनस ग्लो देने के लिए आई एम गोइंग टू बी एडिंग द NYX बॉर्न टू ग्लो इल्यूमिनेटर। इंस्टेंटली गिव्स यू दैट फेस्टिव ग्लो ऑन योर स्किन। उत्सव ने चूज किया है ये साड़ी। वील सी हाउ वी फील आफ्टर द एंटायर लुक इज कंप्लीटेड। Tarte Shape Tape Concealer. Under your eyes, over the eyelids, जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है। The Compact from Clinique Damp Beauty Blender के साथ मैं इसको सेट कर दूंगी। Baking. This is the ADS Luxury Powder Banana which I got from Cups and Lashes. उसको येलो पाउडर है, इसको उसमें से लेके अगर आपको यहाँ पर स्माइल लाइन्स होती है हर जगह, आप इसको बेक करके एटलीस्ट 30 सेकंड तक रख सकते हो। इसको मैं 30 सेकंड रखूंगी। जब तक ये है तब तक मैं अपने आईब्रोज को शेप कर लूंगी। मैं लॉरियल का ब्राउ किट यूज कर रही हूँ। तो अभी आईब्रोज बनवा लिए हैं मैंने। जो एक्सेस था उसको मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी with a fluffy brush. I'm going to take a very simple golden shimmery eyeshadow which is the Glamorous eyeshadow from Makeup Geek and just pat it on my eyelid and blend it. फिर इस कलर को मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूंगी। क्रीज लाइन एरिया में ऊपर मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है and that's about it. ओके, सो अब मैंने काजल अप्लाई कर लिया है। अगर आपके पास फॉल्स लैशेस है एंड ग्लू है, प्लीज उसको अप्लाई करें। मेरे पास नहीं है, सो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट अप्लाई इट, बट आई हैव डिसाइडेड नाउ टू गेट माई सेल्फ वन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ सिंपल आईलाइनर। लोअर लैश लाइन में थोड़ा और स्मोकी एंड ब्यूटीफुल इफेक्ट देने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द शेड बिटन with the same brush. This is a brownish reddish tinge. I'm starting on the outer corner and then dragging it inside. Mascara on the lower lash line. This is this bronzer. This is from Body Shop. I'm going to use the cleaner side of the same beauty blender. I'm trying to not use a lot of brushes. The reason I'm using less brushes is because then I have to wash it. हल्का सा forehead में the bronzer का रोल ये होता है कि क्योंकि आपने फाउंडेशन लगाया तो फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, so it gives some kind of depth and definition to your face. I'm now blending it with a fluffier side, just blending it out. Pretty Wet n Wild ombre colored blush. As you can see the shade here, it's a very pretty subtle shade. I'm going to take this brush, smile, and it's a very subtle shade, guys. You like literally hair and nahi hai, tinge dega. Okay, finally I'm using my highlighter. This is the PAC Baked Highlighter shade 02. The warmth of my fingers to blend it on the highest points of my cheek. Just
apply as much as possible because you want to glow for your festival. Get you festival. वैसे there's another makeup that I did last week or sometime I think, and you can also try that. Color Bar Lipstick Storm. Applied my lipstick, and the final touch is going to be, of course, a bindi because Karwa Chauth and Diwali is impossible without bindis. So I'm wearing a lal bindi and just adding a bit of shimmer and glitter. I'm going to apply some sindoor. So here we are. Oh my god, it's too much. Now I have to make my hair. I'm going to wear my jewelry and I'm going to get back and show you my entire outfit and my. Okay guys, now starting with the morning skincare, I'm using the Dermaco products guys. So I'm using the AHA BHA foaming cleanser. Now Dermaco products, as you already know, these are dermatologically tested and recommended products. This much is what I'm taking. Very good foaming cleanser or face wash to remove impurities. This has glycolic acid, salicylic acid and mandelic acid, which really helps in brightening the complexion and removing dead skin cells. Okay, now that I have washed my face, guys, they honestly disclose the amount of potent ingredients they have in their product like kojic acid, niacinamide, vitamin C. So I'm taking this particular niacinamide serum. This has 10% niacinamide in it. For acne marks, it has vitamin B3, zinc, because Dermaco has very potent ingredients in them. So always do a patch test before trying the product. Reduces your pore size and also controls the sebum production because it is infused with zinc. It has niacinamide which fades acne marks and makes your skin even tone. It believes in promoting a life without filters. You should heal your skin. You should love the skin that you're born with. Of course, I have the link of the products in the description box. You can check them out and you can use the discount code of Anvesha20 on the products. They are safe products, effective products that skin experts have themselves built for us. And अभी मैं करने वाली हूँ अपना dress change before the makeup, and I'm going to wear a proper outfit that I'm going to first show you how Utsav selects the outfit for me. Actually laid out 5 sarees in front of Utsav so that he can choose and select which one I will wear, and उसके according मैं फिर makeup भी करूँगी, jewelry भी decide करूँगी, सब कुछ. This is a red colored Banarsi silk. This is green color Chanderi साड़ी. This is actually मेरी शादी का बनारसी वाइन, रेड वाइन भी कह सकते हो आप. Orange colored chiffon साड़ी. And the last option that I have for him is this बंदेज साड़ी. Now मेरे पास ज्यादा साड़ी तो यहाँ पर है नहीं, but जो भी है I think ये festive appropriate है. Let's see. Utsav, which one do you want? What did you call this? Bandej. Utsav, out of these 5, which one do you think I should wear for if it's Diwali or Karwa Chauth? I think the red one. Red Banarsi. This one ना? Okay, I'll wear this. रेड कलर का साड़ी में पहनेंगे और उसके साथ उत्सव ये देखो ज्वेलरी के कुछ ऑप्शन दिए मैंने. इनको देख लो, ज्वेलरी के कुछ ऑप्शन दिए. तो कौन सा? ये पर्ल है, ये कुछ एलिगेंट. I think the gold one. This one or this one? No, the golden one. The big one, the choker one, huh? Okay. Sari and makeup look that you can do for Karwa Chauth or Diwali. And let me ask Utsav, what do you think about my entire look? Great. फिर से शादी करते हैं चलो. थोड़ा ज़्यादा हो गया. I'll end my video here. You guys, bye bye. Have a great festival and Diwali coming.